Good morning, class. This is your biology class video, and today we are starting with your next topic, that is cattle farming. So, the rearing of cattle for milk production and farm labor is called cattle farming. Milk producing animals are called milch animals, and the animals that are used for farm activities are called draught animals. So, basically, cattle farming involves the production of milk by rearing of the cattle. Cattle involves your cows, buffaloes. So when we rear these cattle, that means we help them in growth for their milk production and for also taking the help from them for the farm labor. Then it is known as cattle farming. So all those animals which produce milk are called as milch animals, while those which are used in the farm activities, labor activities, are known as draught animals. In cattle farming, both exotic and indigenous breeds of cows are used. Some hybrids are also used, which are offsprings produced by cross mating between the two breeds. तो basically there could be exotic और indigenous breed. Exotic यानी वो breeds जो आउट ऑफ इंडिया से हम लेके आए हैं, एंड इंडिजीनियस ब्रीड्स यानी लोकल ब्रीड्स जो इंडियन ब्रीड्स हैं. सो बेसिकली दे आर यूज्ड, एंड ऑल्सो सम हाइब्रिड्स आर यूज्ड. हाइब्रिड्स क्या होते हैं? वो जो दो दो ब्रीड्स को क्रॉस करवा के एक कोई नई ब्रीड हम डेवलप करते हैं, दैट इज़ द हाइब्रिड ब्रीड. तो इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ काव, काव की जो इंडिजीनियस ब्रीड्स होती हैं उनका नाम है साहिवाल एंड रेड सिंधी. यू कैन सी हियर आर द डायग्राम्स ऑफ बोथ दीज टाइप्स ऑफ काव. Then exotic breeds involve brown Swiss, Jersey and Holstein Friesian. So these are the exotic breeds, those breeds which are developed or which have the origin outside the country. Both exotic and indigenous breeds have their advantages. अपने अपने अलग अलग फ़ायदे हैं दोनों ब्रीड्स के. एक्जॉटिक ब्रीड्स प्रोड्यूस मच मोर मिल्क पर डे एज़ कम्पेयर टू द इंडियन ब्रीड्स, वाइल इंडियन ब्रीड्स आर मोर डिजीज़ रेजिस्टेंट. एक्जॉटिक ब्रीड्स मे कैच डिजीज़ वेरी इजली. तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपना अपना लॉस है. फ़ायदा ये है कि जो एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, बट दे जो इंडियन ब्रीड्स हैं दे आर मोर रेजिस्टेंस टू द डिजीज़, क्योंकि इंडिया में वो इंडिया की ओरिजिन है, तो वो इंडिया के टेम्परेचर को, इंडिया के इन्वायरमेंट को दे नो वेल. सो दैट इज़ वाई दे कुड बी डिजीज़ रेजिस्टेंस, वाइल ऑन द अदर हैंड एक्जॉटिक ब्रीड्स दे कैन कैच द डिजीज़ वेरी easily. And the technique by induced breeding was discovered by Ali Cooney. Now examples of exotic breeds: brown Swiss, Jersey; local breeds Sahiwal and red Sindhi. There are various methods of breeding animals: artificial method and natural method. Improved crossbreeding can be done via a process called artificial insemination. Now, how this crossbreeding is done? Sometimes what happens, suppose there are two different breeds of cow, और एक ब्रीड से हमें ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरे ब्रीड में डिजीज़ रेजिस्टेंस अच्छा है. तो अगर दोनों ब्रीड्स का मेल फीमेल हम लें और उनको आपस में मेट करवाएं, देन वी कैन गेट अ न्यू वेराइटी. एक नया ब्रीड डेवलप होगा, दैट विल बी अ हाइब्रिड ब्रीड, और उसमें वो दोनों क्वालिटीज़ होंगी फ्रॉम द पेरेंट्स. सो दैट इज़ नोन एज क्रॉस ब्रीडिंग, एंड दिस इम्प्रूव्स द क्वालिटी. This could be done by artificial method, artificial insemination. Now, insemination, that means insemination is the process by which artificially will take the sperm of the male breed and then inseminate into the female's body. In artificial insemination, the fresh semen of the healthy bull is inserted into the reproductive tract of the female cow. So this is done artificially by taking this fresh semen of a healthy bull and then inserting it into the female body. The zoological name of cow is Bos indicus, and zoological name of buffalo is Bos bobalis. Now again these are written in italics, so these are printed in the italics form when they have to be printed. But if you have to write it, then you will write it separately, Bos indicus, and then you will underline them separately. So if we talk about animals, they are also very useful. Animals can be of two types, milch and draught animals. Now milch are those which provide milk, like Jersey cow, buffalo, and this is Murra. Murra is a breed of buffalo.
They give milk only during their lactation period and need to have a diet full of vitamins and nutrients so that they give good milk. The exotic breeds have a larger lactation period than the indigenous breed. So basically these breeds they are mostly used when they are in the lactation period. So they give the milk only during their lactation. Now lactation period क्या होता है? वो period जब when a mother give birth to a child and the child requires milk, that period is known as lactation period. So the mother is producing milk for her child, but we also extract the milk from the mother's body for our purpose. So basically milk is only produced during the lactation period, and it need to have good diet full of vitamins and nutrients so that it gives good quality milk. Exotic breeds, they have larger lactation period than the indigenous breed. So if they have larger lactation period, so they can produce milk for a longer time, and that milk can be used by us for our commercial purpose also. Next is the draught animals. Animals used for labor purpose, that is for plowing, sowing, etc. in the farm, are called draught animals, like Haryana bull, horse, camel, etc. So all those cattle which are being used for the labor purpose. Labor purpose यानी प्लॉइंग में, सोइंग में, फार्म में जितने भी काम होते हैं अगर उनमें यूज़ हो रहा है तो उनको हम ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं. लाइक कैमल इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज अ ड्रॉट एनिमल, क्योंकि इसके पीठ पे सामान रख के लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. तो लेबर पर्पस के लिए बेसिकली जो भी एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, दे आर कॉल्ड एज ड्रॉट एनिमल्स. नेक्स्ट इज़ कैटल फीड. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स बाय द कैटल. क्या कैटल को खिलाया जाता है? सो मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट्स. अगर मिल्क प्रोडक्शन हमें अगर चाहिए एनिमल से तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है? दिस टाइप ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मिल्क प्रोड्यूसिंग पीरियड, दैट इज़ द लैक्टेशन पीरियड ऑफ द काउ. So basically it is required when the cow is in the lactation period. Maintenance requirement. This type of food helps the animal to live a healthy life and perform all life processes. So this is a maintenance requirement, that means a healthy lifestyle for the animal. Animal feed comprises of two types of feed with low nutrient but high fiber content. जिसमें कम न्यूट्रिएंट भले से कम हो लेकिन फाइबर ज़्यादा हो, दैट इज़ नोन एज रफेज. एंड जस्ट ऑपोजिट, फीड कंप्राइजिंग ऑफ फूड्स विथ हाई न्यूट्रिएंट बट रिलेटिवली लो फाइबर आर नोन एज कॉन्सेंट्रेट्स. तो रफेज और कॉन्सेंट्रेट में डिफरेंस यही है कि रफेज में फाइबर ज़्यादा होता है और कॉन्सेंट्रेट में कम होता है. Now there are different diseases also which are related to the cattles. Like cattles are very prone to a number of diseases such as cowpox, ringworms, foot and mouth diseases, rinderpest, anthrax. Sick animals show a number of symptoms. So these are the different names of the diseases which are related to the cattles. ये जो diseases हैं आपको केवल cattles में दिखेंगे और mostly symptoms क्या होते हैं? Running nose, ears of such animals may droop, यानी ईयर्स, जैसे इनके ईयर्स जो हैं उनमें से ब्लड आ सकता है. इट लुक्स टायर्ड एंड लूजेस एपेटाइट. द इनएक्टिव एनिमल पासेस वाटरी डंग एंड डिस्कलर्ड यूरिन. सो दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स दैट अ कैटल कैन शो व्हेन they have some disease symptoms. Now protection of animals against these diseases. First is we need to give them proper hygienic conditions should be maintained along with the good sanitation. अब जहाँ हमने एनिमल को रखा है वो हाइजीनिक कंडीशन होना चाहिए, as well as there should be good sanitation also in that area. नेक्स्ट इज़ एनिमल शुड बी ग्रूम्ड एंड वॉश्ड रेगुलरली, यानी एनिमल्स को भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है. दे ऑल्सो नीड टू बी ग्रूम्ड एंड वॉश्ड. प्रेजेंस ऑफ रैट्स, माइस, टिक्स शुड बी प्रिवेंटेड बिकॉज दीज ऑल ब्रिंग अलॉन्ग विद देम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस and which can affect them. Next is healthy nutritious food should be provided to prevent the diseases. This is very general thing that healthy food should be provided, and proper vaccination should be arranged for if required. So if the cattle require any kind of vaccination, so proper vaccination on proper time should be given. Now next on page 135 there is white revolution. Now what is white revolution? So basically white revolution was done to increase the milk production. White is used for milk, और मिल्क का प्रोडक्शन जब बढ़ाने की कोशिश की गई, जो रेवोल्यूशनरी काम किया गया उस टाइम पे, दैट वाज इंक्लूडेड अंडर वाइट रेवोल्यूशन.
So this is the picture of Dr. V. Kurian, who is known as the father of white revolution एंड आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री। इन्होंने ही सबसे पहले ये वाइट रेवोल्यूशन लाया था और इन्होंने ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी की ताकि इंडिया की जो मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री है वो डेवलप हो सके। He was born on 26 November 1921. Dr. V. Kurian is the founder chairman of National Dairy Development Board. White revolution means tremendous increase in the milk production. It was made possible by using new improved breeds of cattle and buffaloes, giving them better food and care. So basically this white revolution was done to increase the प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय इन्हांसिंग सेवरल टेक्निक्स। अलग अलग टेक्निक्स लाके, अलग अलग ब्रीड्स, एग्जॉटिक ब्रीड्स लाके, इम्प्रूव्ड ब्रीड्स लाके, हाइब्रिड ब्रीड्स करके उनके फूड और उनका केयर को ज़्यादा इंक्रीज़ करके। सो बेसिकली इट वाज इंक्रीज़ इन द डेयरी प्रोडक्शन, basically increase in the milk production. Operation Flood, NDDB, designed and implemented as the world's largest dairy movement program called Operation Flood. This program was initiated with the pledge milk to one and all. So basically there was a operation done by NDDB, that is National Dairy Development Board. So they developed a program called Operation Flood. Under this operation they wanted that everyone should get milk. So milk to one and all. They wanted that milk is the basic necessity and it should be given to each. It should be approached by everyone. हर किसी तक मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो पहुंच सके। सिमिलरली इसी तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ था इंडिया में एट द टाइम, एंड इट वाज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। जब हमें एग्रीकल्चर यील्ड जो है इंडिया की उसको इंक्रीज़ करना था ताकि हम हर किसी तक अनाज पहुंचा सकें। जब हमें इस चीज़ की ज़रूरत आई दैट वी नीड टू हैव मोर क्रॉप फील्ड to increase the production of crops, to increase the production of food grains, then it was known as green revolution. Similarly, it was done by improving the agricultural practices in India, improving the high yielding crop facilities, high yielding seeds, प्रोसेस्ड सीड्स, अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। दैट वाज ऑल इंक्लूडेड अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सिमिलरली इट वाज फॉर ऑल्सो द वाइट रेवोल्यूशन। Next is poultry farming. Under poultry farming, large number of domestic fowls and are reared for the production of eggs and meat. Egg-laying poultry birds are called layers, and the birds obtaining meat are called broilers. So basically, poultry farming, it is done for large number of domestic fowls. डोमेस्टिक फाउल्स जितने भी होते हैं उनका रियरिंग, उनसे हमें कितना एग का प्रोडक्शन और मीट का प्रोडक्शन हो सकता है, दैट ऑल इज़ इंक्लूडेड अंडर पोल्ट्री फार्मिंग। तो वो फाउल्स जिनसे वो पोल्ट्री बर्ड्स जिनसे हमें एग ज़्यादा मिलता है, दे आर नोन एज लेयर्स, और जो बर्ड्स का रियरिंग करते हैं फॉर द मीट, दे आर नोन एज ब्रॉयलर्स। Now again there are also indigenous and exotic breeds. Indigenous breeds includes asil, chittagong एंड कदकनाथ। ये जो है अलग अलग टाइप के इंडियन ब्रीड्स हैं। इंडिजीनियस यानी इंडियन ब्रीड्स हैं, और जो बाहर के ब्रीड्स हैं एक्जॉटिक ब्रीड्स लाइक वाइट लेगहॉर्न, रोडे आइलैंड रेड एंड ऑस्ट्रेलोकार्प. So these are the different exotic breeds. Now here's a difference given between layers and broilers. So basically layers, these are reared for the eggs, or broilers are brought up by the use for the meat. Layers, they take 20 weeks after their birth they start producing eggs. Just after 20 weeks of their birth they start producing eggs. They are kept for longer period than the males, for about 500 days. So basically because females they lay eggs. Next is broilers. 6 to 7 weeks after their birth they are sent to the market for the meat. तो क्योंकि इनका बेसिकली 6 to 7 वीक्स में दे आर मच मोर डेवलप्ड फॉर द मीट. नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ऑफ शेड्स इज़ मेंटेन्ड बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर द टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू एज, बट ऑन एन एवरेज इट इज़ बिटवीन 25 to 30 डिग्री. सो लेयर्स वाले जितने भी फाउल्स होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं, जहाँ उनको रखा जाता है द टेम्परेचर शुड बी 20 to 25 डिग्री. बट ब्रॉयलर्स बेसिकली
देयर टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर एज, वो किस एज के ग्रुप में आते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है. द प्लेस वेयर दे आर केप्ट, सो बेसिकली इट इज़ बिटवीन द एवरेज 25 to 30 degree. Layers should be fed with feeds rich in vitamins, minerals and micronutrients because they have to lay eggs, और eggs में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए layers के food में भी ये सारी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए. And broilers because they are to be used for the meat purpose, that is why their food is rich in protein with adequate fat. Layers require adequate space and enough सफिशेंट लाइटनिंग, तो इनको जहाँ रखा जाएगा उन पे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है और सफिशेंट लाइटनिंग ऑल्सो, सो दैट दे ले द एग्स प्रॉपरली. Next, boilers, they are provided with conditions to grow fast and low mortality. So their requirement is that they are grown in a place where they can grow very fast because they have to be sold for the meat purpose, and they should have low mortality. यानी mortality means rate of death, यानी उनकी जो mortality rate हो वो कम हो, death के chances कम हो. Next, diseases related with poultry. Poultry birds suffer from a lot of diseases, including diseases caused by bacteria, fungi, viruses, parasites, etc. Various microbes such as viruses, bacteria, fungi, and parasites cause harmful diseases to the poultry birds. Therefore, proper sanitation and spraying of disinfectants is necessary. Vaccination is also effective in case of infectious diseases. So, we all know that diseases can also occur to these birds also, and there are several ways by which they can have diseases. They could be because of bacteria, fungi, virus. So because these are the parasites that can cause harmful diseases to the poultry birds, that is why the area where they are kept, that should be properly sanitized, as well as also there should be the spraying of disinfectants, because that will help these bacteria, viruses to die, and they make them disease free. Also, vaccination is very effective in case there is some infectious disease, because if one of the bird gets some infectious disease, it can be transferred to the other birds. So it is most necessary that the disease does not spread. That is why proper vaccination should also be given. So that is all for this video. Just go through this video and ask me if you have any doubt. That's all for today. Thank you.